आज का सत्र शुरू करते हैं। हमने ब्रह्म याचन कथा फिफ्थ पद तक पढ़ लिया था। आज छठवां है पंचवग्गीय कथा। हरिंदर जी, आप इंग्लिश पढ़ना चाहेंगे? हाँ, मैं इंग्लिश का पढ़ दूंगा। आप पाली पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये चूंकि काफी लंबा है तो बीच बीच में मैं जितना भी हमें हाँ हाँ, बीच दिखेगा बीच में उतना रोक लेते हैं, ठीक है। मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, thank you। स्क्रीन और बड़ा कर दूं या इतना आपके लिए सफिशिएंट है? नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है। पंचवक्रीय कथा। मुखिको भगवतो एतद्होषि कस्नो को अहं पठमं धम्मं देशेयं को इमं धम्मं क्षिप्तमेव आजानिष्यतीति अथ को भगवतो एतद्होषि अयं को आलारो कलामो पंडितो वृत्तो मेधावी दीर्घरत्नम् अपरजक्ष जातिको यन्हुयानं और यन्हुयानन् आलारस्य कालामस्य पठमं धम्मं देशेयं यो इमं धम्मं क्षिप्रमेव आजानिष्यतीति। Over to you. the account of the group of five, the Buddha thought, who should I teach first? Who will understand this teaching quickly? And it occurred to him, Alara Kalama is wise and competent, and has for a long time had little dust in his eyes. Let me teach him first. He will understand it quickly. अर्थको अंतरहिता देवता भगवतो आरोचे से ही आरोचेसि सत्ता कालंकतो भन्ते आलारो कालामूर्ति भगवतो की खो यानि उदपादि सत्ताह कालंकतो आलारो कालामूर्ति अथ को भगवतो एतद्होषि महाजान्यो को आलारो कालामो सचे ही को इमं धम्मं सुनेय क्षिप्रमेव आजे नैयाति अथ को भगवतो एतद्होषि कृत्सुनो अहं पठमं धम्मं देशेयं को इमं धम्मं क्षिप्रमेव आजानिष्यतीति अथ को भगवतो एतद्होषि। But an invisible God informed the Buddha, Sir Alara Kalama died 7 days ago, and the Buddha also knew this for himself. He thought, Alara Kalama loss is great. If he had heard this teaching, he would have understood it quickly. Again, the Buddha thought, who should I teach first? Who will understand the teaching quickly? And it occurred to him, Udak या Ramaputta Gais. ये मैं पढ़ता हूँ। हाँ, साथ ही अगर अभी ग्रुप में बैठे किसी लोगों को हिंदी अनुवाद जानना है तो हैंड रेज कर दें, नहीं तो फिर अभी हम इंग्लिश में ही करेंगे, असर नहीं। अयंखो उदको रामपुत्रो पंडितो व्यक्तो मेधावी दीर्घरक्तम् अपरजक्ष जातिको यन्याहं उदकस्य रामपुत्रस्य पठमं धम्मं देशेयं यो इमं धम्मं पुत्रमेव आजानिष्यतीति अथ को अंतरहिता देवता भगवतो आरोचेसि
अभिदोष कालंकतो भन्ते उदको रामपुत्रोऽति भगवतोऽपि को याणं उदपादि अभिदोष कालंकतो उदको रामपुत्रोऽति अथ को भगवतो एतद्होषि सच महाजानियो को उदको रामपुत्रो सचे कि सो इमं धम्मं सुनेय क्षिप्रमेव आजानीयाति. And it occurred to him, Udakaramaputra is wise and competent, and has for a long time had little dust in his eyes. Let me teach him first. He will understand it quickly. But an invisible God informed the Buddha, Sir, Udakaramaputra died last night. And the Buddha also knew this for himself. He thought, Udakaramaputra's loss is great. If he had heard this teaching, he would have understood it quickly. अथको भगवतो एतद्होषि कस्सुनो को अहं पठमं धम्मं देशेयं को इमं धम्मं क्षिप्रमेव आजानिष्यतीति. अथको भगवा एतद्होषि बहुकारार्थो मे पंचवग्र्या भिक्खु ये मं पदान् पठितत्तं उपट्ठिंसु यन्नुनाहं पंचवग्र्यानं भिक्खूनं पठमं धम्मं देशेयन्ति. अथ को भगवतो एतद्होषि कहं को एतरहि पंचवग्र्या भिक्खु विहरन्तीति. अदस्साखो भगवा दिव्येन चक्षुना विशुद्धेन अतिक्रमन्तमानुषकेन पंचवग्र्ये भिक्खु वाराणसीयं ऋषिपत्ने निगदाये. अथ को भगवा उरुवेलायं यथा विरन्तं विहरित्वा येन वाराणसी तेन चारिकं पक्कामि. Once again, the Buddha thought, who should I teach first? Who will understand this teaching quickly? And it occurred to him, the group of 5 monks who supported me while I was striving were of great service to me. Let me teach them first. But where are they staying now? With his superhuman and purified clairvoyance, the Buddha saw the group of 5 monks were staying near Banaras in the deer park at Ishapatana. Then after staying at Uruveli for as long as he liked, he set out wandering towards Banaras. अद्दसाको उपको आजीवको भगवन्तं अन्तरा च गयं अन्तरा च बोधिं अध्यानमग्गपट्टिं पट्टि अन्नं विश्वान् भगवन्तं एतद्वोच. दुःखसन्नानि कोथे आहुषो इन्द्रियाणि परिशुद्धो च विवर्णो पर्योदातो कंसित्वं आहुषो उद्दिश्य प्रभुतो को वा ते सखा कस्य वा त्वं धम्मं रोचेसीति. एवं बुद्धे भगवा उपकं आजीवकं गाथा हि अज्झजासि. सब्रविदुहमस्मिन् सब्बेषु धम्मेषु अनुपलिप्तो सब्बञ्जयो तन्हाभये विमुक्तो स्वयं अभियाय कमुद्दिशेयम्. The Ajavika ascetic Upaka saw the Buddha traveling between Gaya and the place of awakening. He said to the Buddha, Sir, your senses are clear and your skin is pure and bright. In whose name have you gone forth? Who is your teacher? Or whose teaching do you follow? The Buddha replied to Upaka in verse, I am the victor, the knower of all, abandoning all. I am not soiled by anything,
Through my own insight, I am freed by the ending of craving. So who should I refer to as a teacher? नामे आचार्यो अर्थी सदृशो मे न विच्यति सदैव कस्मिन् लोकस्मिन् नत्थि मे पटिपुक्कलो अहं हि अर्हा लोके अहं सत्ता अनुत्तरो एकों हि सम्मा सम्बुद्धो सीति भूतोऽस्मि निभृतो धम्मचक्रं पवत्तेतु गच्छामि काशीनन्तपुरम्. I have no teacher. No one like me exists. In the world with its gods, I have no equal. For I am the perfected one, the supreme teacher. I alone am fully awakened. I am cool and extinguished. I am going to the city of Kashi to set rolling the wheel of the teaching. In this world, अन्धिभूतस्मिन् लोकस्मिन् आहैच्छन् हमत दुन्दुभिन्ति यथा को त्वम् आगुसो पटिजानासि अर्हसि अनन्तजिनोति मादिसावे जिना होन्ति ये पत्ता आसवखयं जिता मे पापका धम्मा तस्माहमुपजिनोति एवं बुद्धे उगको आजीवको उपेय पावसोति वत्वा शीसं ओकं पीत्वा उम्मग्गं गहेत्वा पक्कामि अथतो भगवा अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन वाराणसी पतनं निगदायो येन पंचवग्र्या भिक्षु तेन उपसंकमी. in this world, immersed in darkness, I will beat the drum of the deathless. According to your own claim, you must be a universal victor. Indeed, those are like me are victors. Those who have ended the corruptions. I have conquered all bad traits. Therefore, Upaka, I am a victor. Saying, may it be so, Upaka shook his head, chose the wrong path and left. The Buddha continued wandering toward the deer park at Isipatna near Banaras. When he eventually arrived, he went to the group of 5 monks. हाँ सर, एक पॉइंट दिमाग में आया था कि इफ यू गो टू द प्रीवियस पैरा, इट सेज, नहीं छोड़ दीजिए, saying may it be so, Prakash shook his head, and then यहाँ पे लिखा है chose the wrong path and left. तो इसमें wrong path literally, I mean, it can have double meaning. इसलिए मेरे दिमाग में आया. Wrong in the sense of dhamma, wrong in the sense of physical path. I think it is basically Dhamma, because he did not understand Buddha, and that is why he went ahead, because he shook his head कि वो कहते हैं ना कि उसको ऐसा लगा कि ये बहुत देर तक इसने तपस्या की है, तो इनका जो मन है वो बहुत ही विक्षिप्त है, बहुत ही ज़्यादा, so he is overestimating himself. That is what basically it is said. So because of that perception, he thought Buddha is just talking out of his mind. So that is why he chose the wrong path and left. Vatva sisang okupetva umangang kahitva pakkami. ये मग्गम में लगा है. अब का मतलब रॉन्ग हो जाता है क्या? मग्गम तो पाथ हो गया, मग्गम wrong path हो गया ना. But actually, we don't know
because जैसे एसपी सर कह रहे थे कि he may have after confronting Buddha physically also chosen the wrong path, and obviously mentally he could not How follow could Buddha's teaching. So how could that be said at this time? You see, point is that he has chosen a wrong path. Is what is his destination? Where he had to go? Because it is the whatever we are reading from the perception of Buddha. The Buddha, when he has told him something which was very valuable, and the guy does not understand it, the guy shakes his head and then proceeds, and meaning thereby that, oh, I don't believe you. You just go ahead, whatever you want to do. So it is from that context, I think that this would be most likely yes, but it's interesting that we don't know whether he chose the physically wrong path or not. Also I not. mean, that would be very, very, very small thing in such a very deep sutta which he's saying. That part would be very, very, insignificant if that is thought So like in the that. Dhamma sense, in the right path perhaps would have been he requesting Buddha to explain to him what he meant. Yes, yes, yes. To understand more in depth what he wanted to say. But he didn't wait for that. I'm very happy to tell you that I recently spent 7 days on the Buddhist circuit, and I spent very good time there at both these places, Sarnath and this particular place where he is talking about. उससे पहले एक जगह है जहाँ पर वो रुके थे. बहुत अच्छा लगा वहाँ. मैंने काफी वहाँ सुत भी पढ़े, और it was really very, very, I mean, it was a wonderful experience. Good, very nice. मुझे अभी डिक्शनरी देखने का मौका मिला, तो उसमें उम्मग का मतलब लिखा है सुरंग या चोर रास्ता, पर इंग्लिश में लिखा है अ टनल, डेवियस और रॉन्ग वे. जो आप बोल रहे हैं वो तो है ही सही जयंत जी. वो तो हमने उसमें भी फोर नोबल ट्रुथ्स में भी, अजान सुमेधे की बुक में भी उन्होंने इसको मेंशन किया है कि द फर्स्ट देशना वाज ए डिजास्टर फॉर बुद्धा. उन्होंने बोला और सामने वाला ने माना ही नहीं. देन ही सेड कि मैं कुछ यूनिवर्सल स्टेटमेंट बोलूंगा कि दुनिया में दुख है, इसको तो हाँ, हर कोई मरेगा. हाँ, तो दैट इज ट्रू. बट दैट्स लाइक आप लोगों ने डिस्कस किया, तो डिक्शनरी में लिखा है उम्मग का मतलब डेवियस और रॉन्ग वे, तो मार्ग का उन्मार्ग है. Okay. एक बार मैं यहाँ से पढ़ता हूँ. अददन सुखो पंचवज्ञया भिक्खु भगवन्तं दूरतो आगच्छन्तं विश्वान् अय्यमय्यं कथितं सन्ठपेसुं अयं आहुषो समनो गौतमो आगच्छति बाहुल्यतो पदान् बिभ्रन्तो आवत्तो बाहुल्याय सोनेव अभिवादेतव्यो नापच्युतातव्यो नास्पत् चीवरं पटिग्रहेतव्यम् अपि चाको आसनं ठपेतव्यं सचेसो आकङ्क खिस्सति निषीदिष्यतीति यथा यथा को भगवा पञ्चवग्ये भिक्खु उपसङ्कमति तथा तथा पंचवव्या भिक्खु न सत्थिषु सखाय कथिकाय सन्ठातुम् असंठहन्ता भगवन्तं पच्छुबन्त्वा एको भगवतो पत्तचीवरं पटिग्रहेसि एको आसनं पंचपेसि एको पादोदकम् एको पादपीठम् एको पादकठलिकम् उपनिक्षिपि निषीदि भगवा पञ्यत्ते आसने निसज्जितो भगवा पादे पक्खालेसि अप्पिषु भगवन्तं नामेन च आहुषो वादेन च समुदाचरन्ति. Seeing him coming,
The group of 5 made an agreement with one another. Here comes the ascetic Gautama, who has given up his striving and returned to a life of indulgence. We shouldn't bow down to him, stand for him, or receive his bowl and robe. But we should prepare a seat. If he wishes, he may sit down. But as the Buddha approached, the group of 5 monks was unable to keep the agreement. One went to meet him to receive his bowl and robe. Another prepared a seat. Another set out water for washing the feet. Yet another set out a footstool. And the last one put out a foot scraper. The Buddha sat down on the prepared seat and washed his feet. But they still addressed him by name and as friend. एवं बुद्धे भगवा पंचवग्ये भिक्खुवे तद्वोच मा भिक्खवे तथागतन्नामेन च आहुसो वादेन च समुदाचरथ अरहं भिक्खवे तथागतो सम्मा सम्बुद्धो ओदहत भिक्खवे सोतं अमतं अधिगतं अहं नुशासामि अहं धम्मं देसेमि यथानुसिद्धं तथा पटिपज्यमाना न चरस्येव यत्सत्थाय कुलपुत्ता सम्यदेव अगारस्मा अनगार्यं पभ्यजन्ति तदनुत्तरं ब्रह्मचर्यपर्योसानं दिट्ठेव धम्मे सयं अभूया सच्चिकत्वा उपसम्पज्य विहरिष्यथाति एवं बुद्धे पंचवग्या भिक्खु भगवन्तं एतद्वोचुं तायपि को त्वं आहुसो गोतम इर्याय ताय प्रतिपदाय ताय दुक्कर कार्याय नेव जगा उत्तरी मनुष्य धम्मा अलमरियाण दर्शन विशेषं किं पं त्वं एतरहि बाहुल्यको पदान बिभ्रन्तो आवत्तो बाहुल्याय अधिगमिष्यसि उत्तरी मनुष्य धम्मा अलमरियाण दर्शन विशेषन्ति. The Buddha said to the group of 5 monks, "Monks, don't address the Buddha by name or as friend. Listen, I am perfected and fully awakened. I have discovered the deathless. I will instruct you and teach you the truth. When you practice as instructed, in this very life, you will soon realize with your own insight the supreme goal of the spiritual life, for we gentlemen rightly go forth into homelessness." They replied, "Friend Gautama, by practicing extreme austerities, you didn't gain any superhuman quality, any distinction in knowledge and vision worthy of noble ones. Since you have given up your striving and returned to a life of indulgence, how could you have achieved any of this?" एवं बुद्धे भगवा पंचवग्ये भिक्खु एतद्वोच ना भिक्खवे तथागतो बाहुल्यको ना पदान बिभ्रन्तो ना आवत्तो बाहुल्याय अरहं भिक्खवे तथागतो सम्बुद्धो ओदहत Samma भिक्खवे Sambuddho. सम्मा सम्बुद्धो ओदहत भिक्खवे सोतं अमत अधिगतं अहम् अनुशासामि अहं धम्मं देसेमि पे तुतियम्पिको पंचवग्या भिक्खु भगवन्तं एतद्वोचिन्ते द्वितीयम्पिको भगवा पंचवग्ये भिक्खु एतद्वोचते तृतीयम्पिको पंचवग्या भिक्खु भगवन्तं एतद्वोचु
तायपि त्वं आवुसो गोतं विर्याय ताय पटिपदाय ताय दुःखरकार्याय नेव जगा उत्तरी मनुष्यदम्मा अलमरिययाण दस्सन विशेषं किं पन्त्वं एतरहि बाहुल्यको पदान् बिभ्रन्तो आवत्तो बाहुल्याय अधिगमिष्यसि उत्तरी मनुष्यधम्मा अलमरिययाण दस्सन विशेषन्ति एवं बुद्धे भगवा पंचवग्ये एतद्वोच। The Buddha said, I haven't given up striving and returned to a life of indulgence. And he repeated what he had said before. A second time, the group of 5 monks repeated their question. And a second time, the Buddha repeated his reply. A third time, they repeated their question. And the Buddha then said, have you ever heard me speak like this? तयम्पिको पंचवग्या भिक्खु भगवन् एतद्वोचुं तायपिको त्वं आवुसो गोतं इर्याय ताय पटिपदाय ताय दुःखरकार्याय नेव जगा उत्तरि मनुष्यधम्मा अलमरिययाण दस्सन विशेषं किं पन्त्वं एतरहि बाहुल्यको पदान् बिभन्तो आवत्तो बाहुल्याय अधिगमिष्यसि उत्तरि मनुष्यधम्मा अलमरिययाण दस्सन विशेषन्ति एवं ते भगवा पंचवग्ये भिक्खुवे तद्वोच अभिजानात् मेनो को तुम्हें भिक्खवे इतो पुब्बे एव रूपं प्रभावितमेतन्ति नो हेतं भन्ते अर्हं भिक्खवे तथागतो सम्मा सम्बुद्धो ओदहत भिक्खवे सोतं अमतं अधिगतं अहं अनुशासामि अहं धम्मं देशेमि यथानुशिष्टं तथा प्रतिपज्यमाना न चिरस्यैव यस्सत्थाय कुलपुत्ता संविदेव अगारस्मा अनगार्यं अवजन्ति तदनुत्तरं ब्रह्मचर्य पर्योसानं तिष्ठेव धम्मे स्वयं अभिज्ञा सच्चित्वा उपसम्पज्य विहरिष्यथाति असक्खिको भगवा पंचवग्ये भिक्खु संज्ञापेतुम्। Third time, they repeated their question, and the Buddha then said, have you ever heard me speak like this? And it is again, he's repeating. Then they reply, no, sir. Then listen, I am perfected and fully awakened. I have discovered the deathless. I will instruct you and teach you the truth. When you practice as instructed, in this very life, you will soon realize with your own insight the supreme goal of the spiritual power, for which gentlemen rightly go forth into homelessness. असक्खिको भगवा पंचवग्ये भिक्खु संज्ञापेतुम् अथ को पंचवग्या भिक्खु भगवन्तं शुश्रूषिषुं सोतं ओदहिषुं अय्याचित्तं उपट्ठापेषुम् अथ को भगवा पंचवग्ये भिक्खु आमन्तेषि द्वयमे भिक्खवे अन्तापविजितेन न सेवितव्या कथमे द्वे यो चायं कामेषु कामसुखल्कानुयोगो क्षीणो धम्मो ओथुजनिको अनर्यो अनर्थसंहितो यो चायं अत्तिकिलमथानुयोगो दुःखो अनर्यो अनर्थसंहितो एते को भिक्खवे उभो अन्ते अनुपगम्य मध्यमा पटिपटा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकर्णी यानकर्णी उपशमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बानाय संवत्ति। The Buddha was able to persuade the group of 5 monks. They then listened to the Buddha, paid careful attention, and applied their minds to understand. And the Buddha addressed them. There are these two opposites that should not be pursued
pursued by one who has gone forth. One is the devotion to worldly pleasures, which is inferior, crude, common, ignoble, and unbeneficial. The other is the devotion to self-torment, which is painful, ignoble, and unbeneficial. By avoiding these opposites, I have awakened to the middle path, which produces vision and knowledge, which leads to peace, insight, awakening, and extinguishment. कथमा च सा भिक्खवे मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्षुकर्णी यानकर्णी उपशमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवर्तति अयमेव अर्यो आष्टाङ्गिको मग्गो संयतिदं सम्मादिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि अथ को सा भिक्खवे मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्षुकर्णी यानकर्णी उपशमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवर्तति इदं कोपन भिक्खवे दुःखं अरिय सच्चं जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखो मरणंपि दुःखं अप्रियेहि संप्रयोगो दुःखो प्रियेहि विपयोगो दुःखो यम्पि इक्षं न लभति तम्पि दुःखं संकित्तेन पंचुपादान खंदा दुःखा दुःखोपन भिक्खवे दुःख समुदयं अरिय सच्चं. And what, monks, is the middle path? It is just this noble eightfold path. That is, right view, right aim, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right stillness. And this is noble truth of suffering. Birth is suffering, old age is suffering, sickness is suffering, death is suffering, association with what is disliked is suffering, separation from what is liked is suffering, not getting what you want is suffering. In brief, the five aspects of existence affected by grasping are suffering, and this is noble truth of the origin of suffering. यायं तन्हा पोनो भविका नन्दिराग सहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी संयतिदं काम तन्हा भव तन्हा विभव तन्हा निदकोपन भिक्खवे दुःख निरोधं अरिय सच्चं यो तस्सा एव तन्हाय अशेष विराग निरोधो चागो पटि निस्सग्गो मुक्ति अनालयो दुःखोपन भिक्खवे दुःख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सच्चं अयमेव अर्यो अष्टाङ्गिको मग्गो संयतिदं सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि इदं दुःखं अरिय सच्चन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुप्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि यानं उदपादि पञ्ञा उदपादि उज्जा उदपादि आलोको उदपादि. The craving that leads to rebirth, that comes with delight and sensual desire, ever delighting in this and that, is craving for worldly pleasures, craving for existence, and craving for non-existence. And this is noble truth of the end of suffering, the full fading away and ending of that very craving, giving it up, relinquishing it, releasing it, letting it go. And this is noble truth of the path leading to the end of suffering. Just this noble eightfold path, that is
right view, right aim, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right stillness. I knew that this is the noble truth of suffering. Vision, knowledge, wisdom, understanding, and light arose in me regarding things I had never heard before. तन्कोपनिदं दुःखम् अरिये सच्चं पर्ययन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुम् उदपादीयानम् उदपादि पञ्या उदपादि विच्चा उदपादि आलोको उदपादि तन्कोपनिदं दुःखम् अरिये सच्चं परियातन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुम् उदपादीयानम् उदपादि पञ्या उदपादि विच्चा उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःखसमुदयं अरिये सच्चन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुम् उदपादि ज्ञानम् उदपादि पञ्या उदपादि विच्चा उदपादि आलोको उदपादि तन्कोपनिदं दुःखसमुदयं अरिये सच्चं पहातब्बन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुम् उदपादि ज्ञानम् उदपादि पञ्या उदपादि विच्चा उदपादि आलोको उदपादि तन्कोपनिदं दुःखसमुदयं अरिये सच्चं पहिनन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुम् उदपादि ज्ञानम् उदपादि पञ्या उदपादि विच्चा उदपादि आलोको उदपादि. I knew that this noble truth of suffering should be fully understood. So rest is repeated. I knew that this noble truth of suffering had been fully understood. I knew that this is the noble truth of the origin of suffering. I knew that this noble truth of the origin of suffering should be fully abandoned. I knew that this noble truth of the origin of suffering had been fully abandoned. तन्कोपनिदं दुःखसमुदयं अरिये सच्चं पहिनन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु ते इदं दुःखनिरोधं अरिये सच्चन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु ते तन्कोपनिदं दुःखनिरोधं अरिये सच्चं सच्चिकातब्बन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु ते तन्कोपनिदं दुःखनिरोधं अरिये सच्चं सच्चिकतन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु मे ते इदं दुःखनिरोधगामिनी पटिपदा अरिये सच्चन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु ते तन्को दुःखनिरोधगामिनी पटिपदा अरिये सच्चं भावे तब्बन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु ते. I knew that this is the noble truth of end of suffering. I knew that this noble truth of the end of suffering should be fully experienced. I knew that this noble truth of the end of suffering had been fully experienced. I knew that this is the noble truth of the path leading to the end of suffering. I knew that this noble truth of the path leading to the end of suffering should be fully developed. I knew that this noble truth of the path leading to the end of suffering had been fully developed. यावकी वंच मे भिक्खवे इमेषु चतिषु अरिये सच्चेषु एवं त्रिपरिवट्टं द्वादशाकारं यथा भूतं ज्ञानदर्शनं नासु विशुद्धं अहोसि नैव तावाहं भिक्खवे सदैव के लोके समार्के सब्रह्मके ससमण ब्राह्मण्यापजाय सदैव मनुष्याय
अनुत्तरं सम्मा सम्बोधि अभिसम्बुद्धोति पंचयासी यतो चाखो मे भिक्खवे इमेषु चतिषु अर्यसच्चेषु एवं परिवट्टं द्वादशाकारं यथा भूतं ज्ञानदर्शनं सुविशुद्धं अहोसि अथाहं भिक्खवे सदेवके लोके समारिके सब्रह्मके ससमण ब्राह्मणिया पजाय सदेव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा सम्बोधिं अभिसम्बुद्धोति पंचन्यासी ज्ञानं च पन्मे दर्शनं उदपादि अकुप्पा मे विमुक्ति अयमत्तिमा जाति नत्थिदानि पुनर्भवोति इदं वोच भगवा अत्मना पंचवज्ञया भिक्खु भगवतो भासितं अभिनन्दन्ति. So long as I had not fully purified my knowledge and vision according to the reality of these four noble truths and their 3 stages and 12 characteristics, I didn't claim the supreme full awakening in this world with its gods, lords of death, and supreme beings, in this society with its monastics and Brahmins, its god and humans. But when I had fully purified my knowledge and vision according to the reality of these four noble truths with their 3 stages and 12 characteristics, then I did claim the supreme full awakening in this world with its gods, lords of death, and supreme beings, in this society with its monastics and Brahminics, its gods and humans. And knowledge and vision arose in me. My freedom is unshakable. This is my last birth. Now there is no further rebirth. This is what the Buddha said. The monks from the group of 5 were pleased and they rejoiced in the Buddha's exposition. ये जो 3 stages 12 characteristics हैं, मेरे मन में ख्याल आया कि एनी टाइम सर्कमस्टांसेस परमिट्स तो इस पर कभी पैनल डिस्कशन हो सकते हैं. नॉर्मली भूल जाते हैं 3 stages और 12 characteristics को कैसे डेवलप करना है. सर ने बताया था. आगे किमस्मिन् च पन्वेय्याकरणस्मिन् भय्यमाने आयस्मतो कौन्तेयस्य विरजङ्गीतमलं धम्मचक्षुमुदपादि यं किञ्चि समुदयं धम्मं सव्वं तं निरोधधम्मन्ति पवतित्ते चापन् भगवता धम्मचक्रे धूमादे सत्तम् अनुसावेशुं एतं भगवता वाराणसीयं इषिपत्ने निजदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवतित्तम् अपटिवत्यं समरेण वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति ब्रह्मानं देवानं सद्दं सुत्वा चातु महाराजिका देवा सद्दम् अनुवत्सावेशुन्ते चातु महाराजिकानं देवानं सद्दुं सुत्वा तावतिंसा देवापे यामा देवापे तुषिता देवापे. And with this exposition was being spoken, and while this exposition was being spoken, Venerable Kondanya experienced the stainless vision of the truth. Anything that has a beginning has an end. When the Buddha had set rolling the wheel of the teaching, the earth gods cried out. At Banaras in the deer park at Isipatna, the Buddha has set rolling the supreme wheel of the teaching. It cannot be stopped by any monastic Brahmin, God, Lord of Death, Supreme Being, or anyone in the world. Hearing the earth gods, the gods of the 4 great kings cried out. Hearing the gods of the 4 great kings, the gods of the 33 cried out. The Yama gods, the contented gods. A small observation here, Nikhil. Yes, sir. जब भगवान ने अपना 4 नोबल ट्रुथ्स का एक्सपोजिशन किया तो उसके बाद कौंडन्या का रिएक्शन जो था, इट वाज अबाउट अनिच्छा. That is what strikes me, because Bhagavan did not talk about anicca anytime. But
but his reaction was that of anicca. Anything that has a beginning has an end. I was wondering whether there is any significance of this. It is said that Kaundinya, because he was very sharp, and he already was quite elevated. So obviously that must be the case. That is why his name is being mentioned here specifically, and this is what ultimately his experience. He has not said it, but this is perhaps as per Buddha's experience. I mean, no, my only observation was that Bhagavan is talking about the Four Noble Truths. Yeah. You're right. His utterance is about anicca. Yes, absolutely. Very interesting point, sir, because in the next sutta that Bhagavan gave, where all of them got, enlightenment, was on anatta. When the rest four were also that's Anatta Lakhan Sutta. Yeah. Very interesting. I think you're right. His utterance is kind of explaining the anicca, and maybe Bhagavan realized in the next sutta he kind of said that anatta is something that you have not realized yet, and that is why you're stuck. So his next sutta was around giving the exposition on the anatta in Anatta Lakhan Sutta. So apparently, while he was listening to the Deshna, he was also contemplating, and he arrived at this aspect of the truth. That contemplation, probably. Yeah. I think so. It's not a contemplation. It's a bhavit gyan. That's why he was saying कि ये अन्य kondal. He was given the after this. It's not. I mean, what he's saying is correct. I mean, what you are saying is definitely seems so that it's just anatta is being realized in this sutta, and after that, because later on only basically all five were got entered the stream. Sotapanna ban gaye the. Yeah, Sotapanna तो ये अभी बन गए हैं. This is Sotapanna. Only Kaundinya. Only Kaundinya became Sotapanna after hearing the first discourse. Yeah. This one. After that, all five of them, ना जब वो अनंत लक्षण सूत्र पढ़ते हैं, तब तो वो पूरा बन जाते. Yeah. सारे लोग बन जाते हैं, but not me. But that is, I mean, that's a crucial thing that, I was also thinking that Vinayapiṭaka Vivechan is such an important thing then. First step, initial step. I think all three are important. Somehow I feel we need to take them all three together rather than giving over importance to one or the other, or keep putting them in a sequence कि पहले ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए. I think all three has to be developed together. Sir has mentioned this, three-legged stool, and any imbalance in that would not, lead for progress. So I think once they realized all of them together in the first and the second discourse, that is when they kind of became Sotapanna or enlightened. एक तो मुझे फैक्ट चेक करना है आप लोगों से. जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो पहला सूत्र था धम्मपवर्तन सूत्र, इसमें अमंग फाइव सबसे पहले कौंडिन्य बन गए थे सोतापन्न, लेकिन जब तक ये सूत्र एंड हुआ
तब तक पांचों बन गए थे, फिर अनंत लखन में पांचों के पांचों अरहंत बन गए थे। ये धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के एंड तक में भी फर्स्ट अमंग द फाइव वाज कौन नहीं है यहाँ पर इस स्टेज पर। फिर इसके एंड तक आते आते, ये मेरी इंफॉर्मेशन है, आई जस्ट वांट टू आस्क वेदर इट इज द सेम पीस ऑफ आप आगे इंफॉर्मेशन। पढ़िए, अपने आप पता चल जाएगा। ओके, क्योंकि ये मैंने एक्चुअली मैंने ये जानकारी ली थी कि धम्मचक्र नहीं, ठीक कह प्रवर्तन रहे हैं सूत्र में आप ठीक कह ऐसा रहे हैं। हुआ है ना। फिर बोलते थे कि अनंत लखन के बाद 5 अरहंत हो गए थे, ऐसे करके हो गए दुनिया में। सो लेट्स सी, मेरे को भी कंफर्म नहीं है। और बाकी सर आपने एकदम वैलिड ऑब्जर्वेशन है, मेरा भी दिमाग थॉट में चला गया। मेरे को अभी इंस्टेंटली तो ख्याल आता है, कुछ लॉजिक देने का मन होता है, तो मुझे लगता है शायद उन्होंने सेकेंड और थर्ड नोबल सूत्र से कुछ जाना होगा कि दुख का समुदय भी है और दुख का निरोध भी है, तो उन्होंने समझा होगा अगर बिगनिंग है तो एंड भी है, शायद वहां से कुछ किया। बाकी तो दिस इज अ फूड फॉर माई थॉट। डज इट साउंड लॉजिकल सर? possible. सेकेंड और थर्ड नोबल And से कुछ मैच what is the wheel of teaching, or rolling the wheel of teaching? Four noble truths may be the wheel of teaching. Is that rolling the wheel of teaching? या उसको मैं एक्चुअली व्हील ऑफ टीचिंग को ऐसे देखता हूँ कि कुछ समय अंधकार ही था। भगवान बुद्ध ने जब प्रकट लिया था तो उस समय पूरी दुनिया में अंधकार था, धम्म खो चुका था, तो उन्होंने बोला कि देखो मैं इसको रोल करता हूँ, और कारण क्या है, आप लोग दुखी क्यों हो, क्योंकि तन्हा है। तो वो बताने वाला कोई नहीं था कि लॉजिक उसका फंडामेंटल कॉज ये है और उसको दूर कैसे करना है, वो रास्ता भी बता दिया कि आप मान पकड़ो। तो इसलिए मैं उसको समझता हूँ कि उन्होंने व्हील चलाया। अब इसको कोई रोक नहीं सकता था क्योंकि ये इतना ट्रुथफुल था, इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता था। कोई चला नहीं रहा भाई, कोई चला नहीं रहा यहाँ पे। तो एनीथिंग जो जो दुख है, दुख का कारण है, दुख का समुदय, दुख का वो निवारण है। दिस इज द पाथ एंड दिस इज द व्हील, दिस इज द धम्मा व्हील, दैट्स व्हाट इज। दुख है, उसका खत्म भी होगा, दैट इज टू माय अंडरस्टैंडिंग। व्हील इज दिस, व्हील ऑफ टीचिंग है ना ये। उसमें क्या वो 8 स्पोक होते हैं क्या? अगर किसी ने नोटिस किया हो, जो व्हील हम बनाते हैं, ऐसा तो नहीं उसमें 8 स्पोक्स होते हो तो वो 8 मार्ग हो, अष्टांगिक मार्ग का? आई डोंट रिमेम्बर बट आई टेक इट लाइक दैट। ठीक है। I think the 26 is natural class. इसमें कैसे? Well, I don't मतलब exactly confirm नहीं कर सकती, लेकिन well I think. हाँ ठीक है, धम्म चक्र का क्या इंटरप्रिटेशन लेंगे, वो भी आप ठीक कह रहे हो, वो भी एक बिल्कुल सोचने वाला विषय है कि ये चारों आर्य सत्य को धम्म चक्र मान लें या उनकी सारी टीचिंग्स को, वो भी एक बिल्कुल। No. That's not what. Because anything that has beginning has an end. When Buddha had set rolling the wheel of teaching. So that is, because I'm trying to connect this wheel of teaching with this, what Srinda Sadhi said, that anything has a beginning, has an end. So that's what the teaching is. आपकी आवाज कट रही है थोड़ा That मतलब जो हाँ, मेरा ना गला खराब है। देखिए, तो ऐसा है कि जो आप निखिल कह रहे थे कि उस समय अंधकार था, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि लोग कर्मकांड में ज्यादा व्यस्त थे। वेद पुराण उस समय भी थे। लोग, काशी वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर, अनादिकाल से हो रहा है। ओनली थिंग इज कि लोग छिलका पकड़ के बैठ गए और उसका जो सार है उसको नहीं समझे। तो ऐसा नहीं है कि ये थॉट प्रोसेस नहीं था कि बिगिनिंग है और एंड है। यू सी, इफ यू रीड द संस्कृत श्लोकास एंड इट इज वेरी वेल रिटन इन वेदास आल्सो, तो ये ओनली थिंग इज कि इसको समझने के लिए और यही बात रखने के लिए मन में, और कोई रिचुअल नहीं, कोई आडंबर नहीं, वो कुछ नहीं। तो इसलिए आप देखेंगे कि सारनाथ जो है वो हालांकि काशी से हालांकि कुल 12 या 13 किलोमीटर दूर है, ज्यादा नहीं है दूर। तो बट व्हाई डिड इट हैपन कि इट वेंट इन ओब्लिवियन एंड काशी रिमेन्ड वेयर इट इज। सो ये भी एक बात सोचने की है ना, क्योंकि
एक प्रोसेस तो था ही इस देश के अंदर. And at one given time, yes, Buddha's teachings were so prominently being understood, and there is a lot of history in it. But definitely ये जो beginning और end है, ये नहीं हम कह सकते कि ऐसा विचार नहीं था. ऐसा विचार था. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि गर्भ निवासम. तो ये जो श्लोक है, ये भी बहुत ही पुनरस्मिन् माधव, उसमें माधव के लिए कहा गया कि मुझे इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकालो. इस तरह का सोच था. करेक्ट, करेक्ट. तो अभी हम अगर आप लोग अनुमति दें तो यहाँ पर ही रोक देते हैं. हाँ, रोक नेक्स्ट टाइम दीजिए. यहाँ से हाँ, पढ़ लेंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जहाँ से विभिन्न देवताओं ने इसका अभिवादन किया है. थैंक यू. एक छोटा सा परिचय कर लेते हैं. Before that, अगर सुरेंद्र प्रसाद जी want, I mean, if you have something to say, please, I mean, I would request you. जी सर, एसपी सर, if you want to add something further. मेरा कुछ ऐसा और कोई विचार नहीं था, just an observation that it was kind of a thing, Bhagavan is talking of the Four Noble Truths and he's talking of anicca. Obviously, that must have come out through the contemplative process that he must be going through while he's listening. मेरा शायद यही कहने का मतलब था. बाकी आप लोग जो कह रहे हैं सब ठीक है. It's relevant. Maybe Professor Har can throw better light on this. Yes sir. Thank you sir. देवता प्रयोजन गाथा. दुःखपत्ता च निर्दुःखा, भयपत्ता च निर्भया, शोकपत्ता च निःशोका, होन्तु सर्वे विपाणिनो. एतावत्ता च अम्हेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं. सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया. दानं ददन्तु श्रद्धाय, शीलं रक्षन्तु सर्वदा. भावना अभीरता होन्तु, गच्छन्तु देवतागता. सभ्ये बुद्धा बलपत्ता, पञ्चेकानं च यङ्बलम्. अर्हन्तानं च तेजेन, रक्षं वन्दामि सर्वसो. दुख से घिरे दुख से दूर हूँ, भय से घिरे भय से मुक्त हूँ. सभी शोक संतप्त प्राणी शोक से मुक्त हूँ. आज तक हमारे द्वारा पुण्यों की अर्जित संपदा का सभी देव अनुमोदन करें, जिससे सबकी प्रसन्नता बढ़े. श्रद्धा से दान दें, अपने शील सर्वदा सुरक्षित रखें. साधना में अविरत रहें, ताकि देवलोक में पुनर्जन्म हो. सभी बुद्धों के बल से एवं प्रत्येक बुद्धों का जो बल है एवं अरहंतों के तेज से मैं हर प्रकार से सुरक्षा निश्चित करता हूँ. भवतु सब मंगलम, रक्षन्तु सब देवता. सब बुद्धानुभावेन सदा सोत्रि भवन्तु ते. भवतु सब मंगलम, रक्षन्तु सब देवता. सब धम्मानुभावेन सदा सोत्रि भवन्तु ते. भवतु सब मंगलम, रक्षन्तु सब देवता. सब संघानुभावेन सदा सोत्रि भवन्तु ते. अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा, बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. स्वाक्षातो भगवता धम्मो,
धम्मं नमस्सामि सुपठिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि। धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू। धन्यवाद। Thank you, Nikhil. Thank you, Rajendra. Thank you very much. थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर राजेंद्र जी हाँ शैलेश जी, मैं राजेंद्र जी से रिक्वेस्ट करने वाला था, हाँ जी, कुछ थोड़ा बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में बता दें थोड़ा। अभी सुनना चाहेंगे या अभी बता दिए अच्छा रहेगा। अभी एक्चुअली क्या है कि आईआरसीटीसी जो है, आईआरसीटीसी रेलवे का एक अंग है, उन्होंने एक ट्रेन शुरू की है जो बुद्धिस्ट सर्किट की चारों तरफ ले जाती है। उसमें जितने भी बुद्धा से रिलेटेड जगह हैं, करीबन 9 जगह हैं,